अंदर हमने क्या इम्प्लीमेंट किया था, हमारी एंटिटी को इम्प्लीमेंट किया था। तो आज मैंने इम्प्लीमेंट किया है कौन सा, अपने रिपोजिटरी को, जिसके अंदर मैंने मेनली दो मेथड बनाए हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, नोटिफिकेशंस को सारे नोटिफिकेशंस को फाइंड करने के लिए वी विल क्रिएट a method to list notification entity. It will return the notification entity, and I have used the JPA naming convention to automatically get generated the query by the JPA. So I didn't use the personal and custom query to give the data. I have used just find by ID. किस ID find by receiver ID से find करेगा, it will find by receiver ID and order the data of the list notifications in by created at and in descending order. So it will order them into descending order by uh, created at, means the latest notification will comes up, then we will uh, create a long count by receiver ID and is read false. मीन्स इसका मतलब है कि अगर रिसीवर की आईडी है जो जिसका उससे उसका काउंट फाइंड करो, मतलब इसका क्वेरी रहेगी सिलेक्ट काउंट ऑल फ्रॉम notification where receiver ID and is read equals to false. So this will be its query that it will generate to retrieve the data. Okay. These are the two methods that we need. And the service that I have created, which is we need 4 to 5 methods. First one is to create the notifications. If a doctor creates the notification, if a patient the create notification, they internally use this method. So we don't need to create a controller of this. We just directly use it from auto wiring and dependency injection. So this will create and this will take all the parameters. मैंने इसको बहुत ही सिंपल रखा है because we can also take a TTO here, but I made it simple as I can. And notification entity object is created here. And now I have set the all receiver ID, message sender ID, and save the data object. Then we have a method of get my notifications of current user. Means it will get all the notifications of the current user. And how it will find the current user? It will find the current user from security context holder. Means JWT टोकन में से एक्सट्रैक्ट करेगा, ये अपना जो टोकन में से एक्सट्रैक्ट करेगा रिसीवर की आईडी. सो करंट यूजर की आईडी विल बी रिसीवर आईडी. सो इसके लिए हमने अगेन पर मेथड यूज किया है गेट करंट यूजर आईडी, जो कि हमारे ऑथेंटिकेशन में से सिक्योरिटी कॉन्टेक्ट होल्डर में से अपना टोकन निकालेगा. टोकन में से जो अपना फिर आईडी रहेगी वो निकलेगी. ऑथेंटिकेशन डॉट गेट नेम से अपना ईमेल निकल जाएगा. ईमेल से हम आईडी फाइंड कर लेंगे यूजर रेपो में. सो दिस विल बी द यूजर डॉट गेट आईडी. यूजर में से अपन ने आईडी ले ली फाइंड बाय ईमेल का यूज करके. देन हमने क्या किया, रिसीवर की आईडी को चेक किया कि अगर नल है तो तुम क्या कर दो कि इसमें एक्सेप्शन थ्रो कर दो, जो कि कैच कर दिया जाएगा ग्लोबल एक्सेप्शन के हैंडल के थ्रू. देन हमने क्या किया, देन हमने किया कि नोटिफिकेशन रेपो है वो कॉल करेगा फाइंड बाय जो भी अपना मेथड था उसको टू फाइंड द नोटिफिकेशन ऑफ करंट यूजर. ओके, इट विल रिटर्न द लिस्ट. हमारा अगला मेथड है कि काउंट करना है, जो भी अपने बेल आइकन पे नोटिफिकेशन आएंगे उसको काउंट कैसे करेगा. तो काउंट करने के लिए हमने क्या किया है, काउंट बाय रिसीवर आईडी एंड इज रीड फॉल्स. मतलब अपन ने जो रीड नहीं किए हैं उनको काउंट करेगा ये मेथड. और ये भी अपना जो रिसीवर की आईडी है, करंट यूजर की आईडी है, उसी से ही फाइंड करेगा. एंड ये मार्क एज अनरीड करेगा. मीन्स अपन साइड में बटन देंगे एक हर नोटिफिकेशन के, मार्क एज रीड, तो तब ये एपीआई कॉल होगी. ये क्या करेगा, नोटिफिकेशन को फाइंड करेगा उसकी नोटिफिकेशन आईडी से, देन उसके रीड को सेट कर देगा ट्रू. तो वो इधर पेज नहीं होगा. फिर जैसे अपन इसको पेज करेंगे ना तो यहाँ पे नहीं आएगा, वो रीड हो चुका है बिकॉज. एंड अपन ने जो सबको अगर मार्क, जैसे अपना फीचर आता है मार्क ओला इज रीड, अपना उसमें भी आता है मैसेजेस वगैरह में. तो उसके लिए अपन ने क्या किया है, अपन ने एक लिस्ट बनाई है, फॉर ईच लूप चला दिया है, जिसके अंदर जितने भी लिस्ट होगी नोटिफिकेशंस की उनके अंदर सेट रीड को कर देंगे ट्रू.
फॉर ईच की जगह अपन स्ट्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर हम नोटिफिकेशंस को लेंगे डॉट स्ट्रीम करके, देन उसको एक्सेस करेंगे एंड मैप लगा देंगे उसके अंदर। मैप से अपन इसको सेट रीड को कर देंगे ट्रू, देन सेव कर देंगे ऑल सारे नोटिफिकेशंस को। और सो ये हमारे सारे मेथड्स हैं। अब अपन बनाते हैं कौन सा कंट्रोलर बनाते हैं एक एक करके सबके। तो अपने को यहाँ पे कितने कंट्रोलर चाहिए होंगे? अपने को चाहिए होंगे वही 5 कंट्रोलर चाहिए। फर्स्ट वन इज टू क्रिएट a notification, second one is to create uh, second one is to get the notifications, and third one is to get the count of the notifications that will be showed in the bell icon, and fourth one is mark notification as readed, and fifth one is to mark all notifications as a read. So अपन कंट्रोलर बनाते हैं अभी। हम क्या करेंगे, इसको रेस्ट कंट्रोलर दे देंगे, बिकॉज हम रेस्ट एपीआई बना रहे हैं। देन अपन क्या कर देंगे, इसको ऑटो वायर कर देंगे अपना जो सर्विस है उसकी नोटिफिकेशन सर्विस, और इसको अपन से कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन रखेंगे क्योंकि सिक्योरिटी के पर्पज से। देन नोटिफिकेशन सर्विस, देन हमारा फर्स्ट मेथड के अपन क्या करेंगे, पहले तो इसमें एक रिक्वेस्ट मैपिंग लगा देंगे। अपना जो इसके अंदर मैप होगा, अपना जो एपीआई का जो एंड पॉइंट मैप करेंगे वो रिक्वेस्ट मैपिंग के थ्रू मैप करेंगे। देन हम लगा देंगे क्रिएट नोटिफिकेशन एंड पॉइंट। उसके लिए हम क्या करेंगे, पोस्ट मैपिंग कर देंगे स्लैश क्रिएट। देन अब क्या करेंगे, पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी से अपन क्या कर देंगे, क्या रिटर्न कर रहे हैं, अपन रिटर्न कर रहे हैं, इसमें चेक कर लेते हैं एक बार। रिटर्न कर रहे हैं हम नोटिफिकेशन एंटिटी। अब नोटिफिकेशन एंटिटी करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसको बाद में डीटीओ से कर दूंगा एक्सचेंज नोटिफिकेशन एंटिटी। देन हम क्या करेंगे, इसको क्रिएट नोटिफिकेशन मेथड बना देंगे। इसके अंदर हम पैरामीटर्स ले लेंगे। कौन कौन से पैरामीटर हैं, उन्हीं को कॉपी कर लेता हूँ। अगर कॉपी ने काम किया तो कॉपी भी नहीं चलता शायद यार। लॉन्ग रिसीवर आईडी, we have successfully built our all the APIs to get all the notifications, and सारे बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाए हुए हैं, बिल्कुल सिंपल वे, because I have just called the service using the mapping, put mapping, get mapping, all the methods with their endpoints. These are the controller. So we will move forward with our next step, that we need to bind and connect our create notification service that will be created by the doctor or the patient. So we need to bind this with our doctor service or patient service. So we will do this notification controller, and we have successfully implemented. And now next step is we need to trigger the notification, create notification in our patient service. Means when our patient is creating an appointment, we need to call the notification after saving the appointment. Means we need to call the notification service, create service after saving the after saving an appointment. What I want to say, here is my new appointment method in my patient service, where I am finding user by its patient email, and user is found, and patient is found, doctor is found. Now we are setting our appointment, and here we saved our appointment. It's very simple. As you can see, we have simply handled all the exceptions. Now thing comes is where we are creating a new notifications for both doctor and patients from here. What patient will see, patient will, for patient we will create a notification with receiver id user.get id, this is patient id, and appointment, your appointment is booked with doctor, doctor का नाम डाल दिया,
and the last name of the doctor and doctor user ID, because it is sending the notification, it will be sender notification. And notification type is appointment. Here same notification type appointment, but here in the doctor one we need user dot get id in sender, means user means a patient is sending a notification to a doctor, and receiver id will be doctor dot get user dot get id, means doctor id will be receiver id here, and message will be like this: you have an appointment from the patient name. And also this will be triggering our create notification service. This will create a new entries, new object in our database tables. So I have used what I have used to build this feature. I have used a raw pen and paper and think like how a notification will save step by step. Means first creating an entity, means where schemas are saved, and all means when we create an appointment, what we need to save in our database, what we need to retrieve from the database, which user ID we need to save, which receiver ID we need to save. That will be all done in a pen and paper. And yeah, in the next step we will trigger our service in our doctor service, because we need to update the appointments. Like if appointment is scheduled, we need to make it scheduled and show a notification for scheduled one. And if a appointment is pending, we need to create a notification for pending one. And if appointment is completed, we need to create an appointment notification for the completed one. So this will be the whole flow of our notification feature. So we will let's implement this. यार इसके बाद क्या है, आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुई। मैंने देखा पूरा आवाज़ मिली नहीं पूरे वीडियो के अंदर, तो मैंने स्पीड को थोड़ा बढ़ा दिया है, जिस कारण अगर आपको देखना है कोड वगैरह तो स्पीड स्लो कर सकते हो। बट मेरा आवाज़ इसमें क्या है, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। सो सॉरी फॉर दिस, बट यू कैन वॉच and learn the code by slowing down the video speed. Okay.